Hello students, how are you doing? Hoping that you all are well and just going or preparing yourself for your coming examinations. Even though schools are closed, but examinations are going to be conducted online and we have to also aiming for our coming board examination. So this is the period where we have to just cover up as much as part of our syllabus. Students, as you know that on seeing the situation that arose due to the pandemic COVID-19, syllabus has been reduced. Few changes has been made by CBSE in the syllabus. Accordingly, the chapter Agriculture and Geography have been added one additional point. Earlier it was not there, and it was taught in economics. And the topic that has been added in geography, that is impact of globalization on the Indian agriculture, as I mentioned, globalization and Indian agriculture. This topic has been added by CBSE to be taught in this particular chapter. In earlier classes related to agriculture, we have discussed about the meaning of agriculture, we have come to know about the importance of agriculture, we have also discussed type of farming, and we have also seen the major crops that are grown in India and their suitable climatic and geographical conditions. We have also gone through the cropping season in India, and then after we have seen technological and institutional reforms required to improve agriculture. So now today we are going to discuss about this particular topic, globalization and its impact on Indian agriculture. Dear students, as I hope that you all are familiar with the word globalization, you might be heard the word, now we are living in global world. What is the meaning of this global world? What is the meaning of globalization? The word globalization comes from global, and ligation means a process through the whole world has been integrated. Actually, in economics, globalization refers to interlinking of world economies together. Interlinking, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना, यही वैश्वीकरण, हिंदी में ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं। आज दुनिया एक छोटी सी गांव के रूप में तब्दील हो गई है। गांव कहने का तात्पर्य कि पहले एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए काफी समय लगता था। आज इंस्टेंटली आप बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं। अगर आपको संदेश भेजना हो, मैसेज कन्वे करनी हो, इंस्टेंट मैसेज होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, SMS है, वीडियो कॉलिंग है। आप फिजिकली आप नहीं हैं, फिर भी आप वहां मौजूद हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिकम सो easier, communication also become very much easier and fast. So that integrate people together. देखिए, ग्लोबलाइजेशन के सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ साथ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। इसीलिए आज दुनिया के किसी एक भाग में कोई घटना होती है, उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। किसी भी घटना का परिणाम पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। आज किसी भी देश में होने वाली कोई एक घटना भी वो केवल उस देश की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका असर कई मुल्कों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जुड़े हुए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन में क्या है? मैंने कहा इकोनॉमी का इंटीग्रेशन मीन्स आपकी मार्केट दुनिया की मार्केट से जुड़ गई। आपके गुड्स दुनिया के मार्केट में जा रहे हैं, दुनिया की मार्केट के गुड्स आपके मार्केट में आ रहे हैं। आपके लोग, आपके लेबर्स, आपके प्रोफेशनल्स दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा करके काम कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोग जिन्हें अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलेगी, वो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ के पूंजीपति दुनिया के हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में पूंजी लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों के पूंजीपति इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
exchange is going on. टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, किसी देश दुनिया के किसी एक देश में कोई आविष्कार होता है, उसका फायदा दुनिया के बाकी लोग लेते हैं। ये प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन के, ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको ब्लड से समझ सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये ग्लोबलाइजेशन के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बच्चों, इन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें ये लगता है कि सर ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज बी गुड फॉर एनी कंट्री or any of its sectors of economy? Yes, it seems to that. But as far as Indian economy is concerned, we have to be very much cautious. We have to be very much attentive while drawing any simple conclusion. Reason behind? There are a number of reasons that we are going to discuss in this class. Before that, just look an overview regarding the importance of Indian agriculture. As we come to know about the meaning of globalization, is the process of integration of domestic economy with world economy. Domestic economy means a system through which and by which people earn their means of livelihood. यानी लोगों के पास वो साधन हो जिसके द्वारा वो अपनी आमदनी अर्जित करते हैं, तो ये वो सिस्टम मैकेनिज्म है। ये इकोनॉमी वास्तव में उसी सिस्टम का नाम है। और हम जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी के अनुसार जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, उसको थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। हम लोग उसको पढ़ चुके हैं शुरू में, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बस थोड़ा सा और उसको ओवरव्यू करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि ये चीजें समझने में आसानी हो। देखिए, जैसे मैंने लिखा है, इंडियन एग्रीकल्चर की ब्रीफ। In India, economic development is directly related to growth of agriculture. That's a very important point. Economic growth in India is directly related to the growth of agriculture. अब आप बोल सकते हैं, sir, we are also having secondary and tertiary sector. Then why you are emphasizing upon agriculture only? No doubt. All the three sectors of economy are important and they are interlinked and interdependent. But as far as Indian agriculture is concerned, the primary sector in India is concerned, it has having its own basic dimensions and features that makes that particular sector very, very crucial for the development of the economy. देखिए क्या है, आपको याद होगा जब हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे, वहां भी चर्चा हुई थी। तो देखिए क्या क्या बातें हैं, फिर समझ में आएगी ये बात। एग्रीकल्चर प्ले अ की रोल इन आवर प्लान इकोनॉमी। डू यू नो प्लान इकोनॉमी? 5 years plans. Our government is preparing development plans for 5 years. This concept of 5-year planning has been taken from Russia, USSR. It is known to you people. अब यहाँ देखते हैं एडवांटेज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट एंड बेस ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए ये क्या है, समझिए ये टर्म्स मैंने लिखा है। एडवांटेज यानी, फिर से पढ़ता हूँ, एग्रीकल्चर प्लेड अ की रोल इन आवर प्लान इकोनॉमी विद इट्स एडवांटेज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट एंड द बेस ऑफ इंडस्ट्रीज। लो इन्वेस्टमेंट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है किसी एक इंडिविजुअल फार्मर के द्वारा। यस, देयर इज अ इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू हैव tractors, other machineries, pesticides, fertilizers and so on, but it does not require that much of money that is required for starting any industry. So in that particular concept, in that particular sense, it has written low investment and the base of industries. देखिए, अब सेकेंडरी सेक्टर से कैसे जुड़ी हुई याद रखिए। अगर एग्रोबेस इंडस्ट्रीज को इक्वेट करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू दी
इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि प्राइमरी सेक्टर और इवन एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर गुड्स। प्राइमरी सेक्टर गुड्स को सेकेंडरी यूज करती है, सेकेंडरी के गुड्स को प्राइमरी यूज करती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन रिश्ता है और ये बहुत बड़ी विशेषता है इंडियन एग्रीकल्चर। ये चीजें सारी इकोनॉमी में है, ऐसे नहीं कि इंडियन इकोनॉमी में, बट इंडियन इकोनॉमी इज हैविंग सम सॉर्ट्स ऑफ टिपिकल फीचर्स। जैसे टिपिकल फीचर्स क्या है कि इवन दो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग नियरली 60% टू द जीडीपी, बट नियरली 60% or more than 60% of Indian population depends upon their means of livelihood on agriculture, contrary GDP में कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए डिपेंड एग्रीकल्चर के ऊपर एक भास्ट पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ी कंट्रडिक्शन है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज बीइंग गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो वो जो कंट्रडिक्शन है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इंडियन एग्रीकल्चर पे क्यों फोकस करती है गवर्नमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली देखते हैं। फॉर इशूइंग फूड सेफ्टी मींस ग्रोइंग मोर फूड क्रॉप्स सो दैट आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन कुड बी फीडेड, नो वन वुड बी गो टू द बेड विदाउट फूड। नेक्स्ट वन, फॉर क्रिएटिंग फार्मिंग सोसाइटीज फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि फार्मिंग सोसाइटी यानी कि फार्मर्स को स्ट्रॉन्ग करना ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। जब अपनी गुड्स को सेल आउट करते हैं मार्केट के लिए तो वो इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन होती है, क्योंकि वही सामान दूसरे देशों में बनी हुई है, उसकी कीमत आपकी कीमत से तय होगी कि आपके सामान की खरीदार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स की आमदनी अच्छी होगी, उनकी क्रॉप्स की आमदनी अच्छी होगी, फार्मर्स की आमदनी अच्छी होगी, फार्मर्स डेवलप करेंगे। Farmers primary sector मैंने कहा कि 60% plus people depends upon agriculture for their means of livelihood. If that much number of people earns good income, that means they are going to just consume more in market. They are going to save more, and that stimulate the growth of economy, and it also contribute in GDP. So to increase GDP. अब इस सिनारियो के साथ अब हम लोग को देखना है एग्रीकल्चर और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिश्ता है। As we have discussed globalization interlinking of economies, और हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन just brought free flow of goods or movement of goods minimum free without any restrictions, free flow of money, free flow of capital, free flow of labor, free flow of technologies। एक देश में बनी हुई कोई सामान उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के बाकी देशों में उपलब्ध हो जाती है, बहुत तेजी से होती है। That are the basic characteristics, inherent features of the globalization। अब इसके इंडियन इकोनॉमी से साथ क्या रिश्ता है? देखिए, जनरली people believe that globalization gives a positive thrust to Indian agriculture. Why? Some experts believe that globalization will help to balance development of agriculture sector. Due to the globalization, changes would occur in the economical condition of farmers, as I have written. इससे क्या होगा कि farmers की economic condition improve होगी। कैसे? जब उन्हें अपनी फसलों के अच्छे कीमत मिलेगी, तो definitely उनकी आमदनी अच्छी होगी, उनकी कंडीशंस इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट, गुड प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो खरीदार ज्यादा होंगे और आपके सामान की क्वालिटी अच्छी होगी, तो यू विल बी गिवन गुड प्राइसेस, तो दैट एनहांस द इनकम ऑफ द फार्मर्स। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली इफ एग्रीकल्चर or farmers earns more, they invest more. So ultimately it increases the employment opportunities not only in agriculture sector as well as the other sectors. Very important. And rural economy and industries, गांवों के अंदर रूरल, भारत एक गांवों का देश है, फार्मिंग गांवों में ज्यादा है,
तो अगर फार्मर्स की आमदनी अच्छी होगी तो रूरल इकोनॉमी बेहतरीन होगी, वहाँ अधिक इन्वेस्टमेंट होंगे, वहाँ अधिक प्रोडक्शन यूनिट बनेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज डेफिनेटली वहाँ ग्रो करेंगे, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी बूस्टअप होगी एंड इंडस्ट्रीज, and ultimately that also supports the agro-based industry and other industries in that. So this is the normal phenomena कि हम ग्लोबलाइजेशन से ये लाभ निश्चित हम प्राप्त करेंगे, but whether this is the ultimate truth, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या ग्लोबलाइजेशन ने केवल इंडियन एग्रीकल्चर को पॉजिटिवली बूस्टअप किया है, या इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर इस ग्लोबलाइजेशन ने नकारात्मक प्रभाव भी डाला है? बच्चों, सच इन दोनों के बीच, एट वन साइड ग्लोबलाइजेशन हैव अ वेरी मच पॉजिटिव impact on Indian agriculture, as well as there are a number of negative impacts too on Indian agriculture. So now we are going to see what are those positive dimensions and negative implications of globalization on Indian economy, and then after we conclude, तब हम बता पाएंगे कि वास्तव में इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के बीच किस प्रकार का रिश्ता है। तो अब हम लोग इन्हीं दो डायमेंशंस को, नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी कैन से दैट इट हैज गिवन पॉजिटिव thrust to the Indian agriculture is increased national income. As we have seen, globalization just lead to the well-being of Indian farmers, as farmers would have the opportunity to export for international market to get more prices or good prices for their crops, for their products. So ultimately it increase or enhance the income of the farmers. It boosts up rural economy and ultimately it boosts up the overall Indian economy. So ultimately the national income increases, GDP increases, per capita income will also increase. So it is the foremost important positive impact. Second, increase in employment. Employment has been also increased. How? See, once you are going to produce production or produce goods for international market, that you have to compete. So a number of activities were also started, like for the sake of exporting the goods, there is a need to just go through a number of processes. Means packaging is there, then after observing the quality control is there. So number of related activities have been immersed. So employment opportunities have been increased. Not only in the agriculture sector, it also increased the employment opportunity in other sectors. This we have already discussed while discussing about sectors of economy. And just now also we have seen how if we accelerate one sector of economy, it ultimately accelerates all the other sectors of the economy. Next one, increasing the share in trade. Due to the globalization, farmers are having the opportunity to sell their products in the international market. So they are having the opportunity to have a good share in the trade. So in India also, agriculture is contributing a good share in the international trade. Next one, increase in the export of agricultural goods. Very much related. आप एक्सपोर्ट से एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी. So it also helps you to earn foreign currency. और अल्टीमेटली इससे एक और लाभ होती है, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अगर दुनिया के किसी देश में कोई तकनीक आगे खेती के लिए तो वो आपके यहाँ भी आए.
these are some positive booster जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को एक अपवर्ड थ्रस्ट किया, ऊपर की ओर थ्रस्ट किया, उसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए मदद। लेकिन क्या ये सच में एग्रीकल्चर को ऊपर ले जाता है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको रोक रही है? हाँ है। अब देखते हैं डिटेल इम्पैक्ट। सबसे पहले स्मॉल प्रोडक्शन फार्म, हमारे यहाँ एवरेज फार्म साइज छोटी है, लगभग एवरेज फार्म साइज 1.5 एकड़ मानी जाती है। इन कंपेरिजन टू अमेरिका, वहाँ फार्म साइज 50 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ के बीच अमेरिका में करता है। तो फार्म साइज छोटा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन आपको उस अनुपात में आमदनी नहीं होगी, आपके कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक इंक्रीज प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, आपके खर्च बढ़ जाते हैं और लो कॉस्ट ऑफ गुड्स, और गुड्स आपके कंपनियों पे बिकते हैं, तो ये आपकी इनकम को इनहांस नहीं कर पाती। देखिए यहाँ बोलते हैं कि इंक्रीज करती है इनकम, लेकिन यहाँ इनहांस नहीं कर पाते, कारण बिग फार्मर्स को तो लाभ हो जाएगा, छोटे फार्मर्स को नुकसान, और इंडिया में मैक्सिमम छोटे फार्मर्स। नेक्स्ट वन, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। आज भी भले ही एग्रीकल्चर नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल most of our farmers are unable to adopt new technology, new agricultural practices due to the lack of capital. They don't have enough money to go for those technologies. तो मतलब उनके पास कर्ज लेने की भी साधन नहीं। They have to depend upon informal source of credit or informal sector of credit. Banking sector, insurance sector का वो काफी प्रभाव है, तो वहाँ किसानों के लिए काफी नुकसान हो जाता है। किसान वहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पाते इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो इनके सामान की अच्छी कीमत नहीं होती है, जबकि बाहर के देशों का सामान आपके देशों में छा जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट, लैक ऑफ इरिगेशन। यू नो इवन टुडे nearly 60% of Indian farms are depending upon rainwater for agriculture. आज भी हमारे 60% से अधिक खेतों में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, अभी भी हम वर्षा पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बलिंग विद मानसून। मानसून के साथ एक जुआ है, अच्छी मानसून अच्छी फसल, अगर मानसून खराब हुई खराब फसल, यदि बाढ़ आ गई वो भी खराब, तो इट्स अ गैम्बलिंग। नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। अब इसका क्या होता है, आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना, यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन एंड रिड्यूस योर कॉस्ट। तो किसानों के अंदर एक दौड़ शुरू हो जाती है कि अधिक से अधिक उपज मिले, तो वो मनमाने तरीके से पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स का खूब इस्तेमाल करते हैं। परिणाम कुछ सालों के लिए प्रोडक्शन तो बढ़ती है, बट अल्टीमेटली डिक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। It pollutes the water, the underground water also. It pollutes the soil and it also affects the environment. It's a great danger associated with that particular globalization. देखिए, globalization ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो, लेकिन globalization के कारण जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, उस परिस्थितियों के कारण किसान मजबूर होते हैं इस प्रकार के काम को करने। इस परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन एग्रीकल्चर गॉट ओनली पॉजिटिव इंपैक्ट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन, इट्स अ मिक्स। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो यू हैव टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू ट्राई टू जस्ट ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। फार्म साइज को बड़ा करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लैंड कंसोलिडेशंस की बात करनी पड़ेगी, लैंड रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, वो इसी से जुड़ी हुई चीज। बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज है उसको इंप्रूव करने के लिए, कैपिटल की जो क्राइसिस है उसके लिए आपको बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, किसानों को आसानी से लोन मिल सके ताकि वो डेट ट्रैप में नहीं फंस सके, उससे उनकी इनकम इनहैंस होगी। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी जस्ट रन्स एज अ साइकिल। किसी एक जगह भी आप एक्सेलरेट करते हो, प्रेशर पुट करते हो, उसकी प्रेशर पूरी जगह महसूस की जाएगी। देयर इज अ अर्जेंट नीड। तो इन सब चीजों पे काम करना, किसानों को ट्रेन करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी अवेयर करानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक और मेजर प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं कम्पीट कर पाते इंटरनेशनल मार्केट में? यू नो
Because developed countries are giving huge subsidies to their farmers, while in comparison to India, we are granting very less amount in the terms of subsidy, because we are a poor country. हम उतना सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो डेवलप कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, हमारे यहाँ कम्पिटिटिव हाई, इसीलिए हमारे किसान इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। These are some complications related to that globalization. क्योंकि you have to be a part of WTO, वहाँ आपको काम करना पड़ेगा। तो students, this is the last topic that we have discussed related to that particular chapter, and I hope that this particular discussion will be very much helpful for you. It is for your better understanding also. If you are having any questions, please send your questions. We will try our level best to give the answers.